So, well, today we will discuss one very interesting differential equation, and that differential equation is known as Clairaut equation. Basically, this equation is a differential equation of first order and higher degrees. And these type of problems having first order and higher degrees can be solvable for p, x and y, okay. But this equation is equation solvable for y, okay. So first let us define how can we represent this Clairaut type of differential equation. So in mathematics, a Clairaut equation is a differential equation of the form yx is equal to x dy over dx plus function of dy over dx, and as you know dy over dx is p, okay. So this becomes y is equal to px, okay, px plus function of p. So this differential equation is known as Clairaut differential equation or simply Clairaut equation. So developed by this Clairaut, he was a prominent French mathematician, also astronomer, geophysicist and intellectual. And this equation was named after Clairaut, who introduced it in 1734. And this is the first order and higher degree differential equation, linear in y and x. Okay. Now let us solve this problem. ठीक है कि इस प्रॉब्लम ये क्यों स्पेसिफिक है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये, ठीक है. अगर ये प्रॉब्लम रूटीन में होती तो हम इसको पहले कर लेते, ठीक है. इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p कर लेते, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x कर लेते या y कर लेते. वो प्रोसेस हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये भी उसी टाइप से हो जाता है, ठीक है. बट क्लैरट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस इक्वेशन में देखी है. उसने कहा है कि अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री को अगर आप क्लैरट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है. आप डायरेक्टली सॉल्यूशन को लिख सकते हो. आपको वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है जो प्रोसेस आपने वहाँ पर सीखा हुआ है व्हेन वी डिस्कस इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई. वहाँ पर जो प्रोसेस आपने लर्न किया हुआ वो प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इतना सा बता दो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्लैरट फॉर्म में है, तो उसने जो सॉल्यूशन दिया उसने बड़ा ब्यूटीफुल सॉल्यूशन दिया इसका. उसने कहा कि अगर आप ये बता दो कि ये क्लैरट फॉर्म है तो सॉल्यूशन आप एक लाइन में लिख सकते हो, रिप्लेस p बाई c, यू विल गेट द सॉल्यूशन. तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये पहली बार क्लैरट ने दी है, ठीक है, कि बाई रिप्लेसिंग p बाई c वी गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. अब देखते हैं p इज इक्वल टू c कहां से आ रहा है. लेट अस सी. नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p. ओके, एज यूजुअल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट p इज इक्वल टू p प्लस x dp over dx plus f dash p dp over dx, and let us consider this equation number 1. Now this term and this term cancel, okay, and we obtain x plus f dash p within the bracket, first bracketed term, and second bracketed term is dp over dx is equal to 0. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जिस फैक्टर में भी dp over dx लगा होगा आपने उस फैक्टर को 0 मानना है, बिकॉज वी नीड जनरल सॉल्यूशन नॉट सिंगुलर सॉल्यूशन. ओके, सो consider this dp over dx is equal to 0 and find the value of x. Okay, and this factor discard. Okay, discarding this factor we have dp over dx is equal to x, and solve this differential equation we get p is equal to c. Okay, now eliminate p from this equation. Okay, so substitute the value of p here, you will get the general solution of the problem y is equal to cx plus function of c. तो कितना सिंपल सॉल्यूशन है ये, ठीक है. आप बस इतना सा प्रूव करो कि ये इस फॉर्म में लिखा गया है बस, ठीक है ना, ये क्लैरट फॉर्म में है, ये क्लैरट डिफरेंशियल इक्वेशन है. then replacing p by c we get the general solution. Okay, so that one is the general or complete solution of equation number 1, and this is one parameter family of straight lines with c as parameter. Hence the solution of Clairaut equation is obtained by replacing p by c. Okay, this one is the method for evaluating these type of solutions. Now
here in Clairaut equations, most of the problems we need what is the singular solution of this problem. Okay, जब भी आप Clairaut की problems करोगे singular solution का जो बात है वो पूछी जाएगी कि सिंगुलर सोल्यूशन भी इसका आप कैलकुलेट करो, तो पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिंगुलर सोल्यूशन. ठीक है, जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन में क्या फ़र्क है. सिंगुलर सोल्यूशन भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है, वो जनरल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन दैट सोल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन. ओके, जैसे आप देखते हो जनरल सोल्यूशन आपने लिखा है, एक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते जाओ, आप फिक्स करते जाओ 2 3 4, यू विल गेट वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए गिवन इक्वेशन, राइट. बट जो सिंगुलर सोल्यूशन है वो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन है, बट दैट सोल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन. सो क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिफाइन दिस singularity. In mathematics, a singularity is in general, okay, a point at which a given mathematical object is not defined, at which given mathematical object is not defined. में ये mathematical object क्या है, ये differentiability भी हो सकती है, डिफाइन फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी हो सकती है, कंटिन्यूटी भी एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट जो है, ठीक है, वो सिंगुलर पॉइंट है. तो ये मैथमेटिकली जो ऑब्जेक्ट है ये आपको जरूर देखना है. ओके, सो विच ए गिवन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड और ए पॉइंट ऑफ एन एक्सेप्शनल सेट वेयर इट फेल्स टू बी वेल behaved in some particular way, such as differentiability, continuity, like this. Okay, for example, this function f(x) equal to 1 over x, अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें, ठीक है, on the real line has singularity at x is equal to 0 where it seems to explode to plus minus infinity and is not defined. So function is not defined. Function डिफाइंड है या नहीं है ये एक आपका मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है. ओके, एंड एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. सो एज फार एज डिफाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू this x is equal to 0 is the singular point for this function. Similarly, the function gx is equal to mod x also has a singularity at x is equal to 0. Why? Since it has differentiable there. Okay, it has not differentiable there. So due to this reason this x is equal to 0 is singular point for this function. Similarly, the graph defined by y square is equal to x also has a singularity at 0 0. Reason is this time it has corner or vertical tangent at that point. Okay, so these are few examples where singularity exists in a particular mathematical object. And what is singular solution? A singular solution, and that singular solution is denoted by ys. Ys, s means singular. Okay, ysx of a ordinary differential equation is a solution that is tangent to every solution from the family of the general solutions. Okay, is a solution that is tangent to every solution from the family of the general solution. And by tangent we mean that there is a point x where ys is equal to yc. So at that point ys is equal to yc. Okay, so at that point the value of the function, okay, the value of the function at that point is equal to the value of the function from general solution. C means complete solution, and y dash s is equal to y dash c where yc is any general solution. Okay, so when these two conditions are satisfied, number one this one and number two this one, okay, then we say that we have this singular solution. Okay, when singular solution satisfy these two conditions. So at singular point this condition holds good, and at singular point this condition also hold good. Now let us see in case of Clairaut equation how can we derive the singular solution. Okay, how can we evaluate the singular solution? So we have given Clairaut equation y is equal to px plus function of p, and as you know, since this one is a Clairaut equation, then what is the general solution? General solution is y is equal to cx plus
function of C, you just replace P by C. Okay. Now, singular solution of Clairaut equation. Beside the complete solution, this one may obtain a singular solution of the Clairaut equation. ठीक है, आप ये तो जनरल सोल्यूशन है, आप इसका सिंगुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, विच सेटिस्फाई द क्लैरेट इक्वेशन. और वो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है, बट वो सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आपकी क्लैरेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट सोल्यूशन थर्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी. ठीक है ना, वो जो कंप्लीट सॉल्यूशन जब निकलेगा वो सी की किसी वैल्यू के ऊपर नहीं निकलेगा. सी की वैल्यू कोई भी यहाँ से आप फिट कर दो, ये वो जो सिंगल सॉल्यूशन है वो एंटायरली डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन होगा. अब क्वेश्चन ये है कि वो सिंगुलर सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीट सॉल्यूशन से नहीं बनेगा, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ओके, सो मेथड ऑफ सॉल्यूशन इज इफ वी एलिमिनेट पी फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड वन इज दिस. ओके, एंड दिस इक्वेशन इज एक्स प्लस function f dash p is equal to 0. Clear? So eliminate p from this equation and this equation, we get the equation involving no constant. Okay, and this is the singular solution. After eliminating p, you will get the singular solution of 1 which gives the envelope of family of straight lines. अब question ये है कि ये process करने के लिए steps क्या क्या है. Okay, so first step is find the general solution by replacing p by c. So first step is calculate this general solution. Okay, we get this general solution. Number 1, first step is find the general solution of the Clairaut equation. Purpose is to find the singular solution. तो इसके बाद के क्या steps है. अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है with respect to c. Okay, so differentiate with respect to c. When you differentiate this equation with respect to c, we get x plus f dash c is equal to 0. Clear? And last step is eliminate c from this equation and from this equation. Eliminate c from third and fourth. Third is this solution, means this solution. Third is this, and 4 is this. Okay, which will give the singular solution of the given Clairaut equation. तो ये process है, ये methods है जिससे आप Clairaut equation का singular solution जो है वो आप evaluate कर पाओगे, right? So let us solve few problems related with this topic, Clairaut equation. How can we evaluate singular solutions, right? And we will discuss few more problems which can reduce to Clairaut form. Okay. So first problem is p is equal to sine y minus xp. Also find its singular solution. So this equation can also be written like this way. Sine inverse p is equal to y minus xp, and this equation can also be written as y is equal to px plus sine inverse p. Y is equal to px plus sine inverse p. And if you compare with the Clairaut equation, okay, you will see that this equation is Clairaut differential equation. Y is equal to px plus function of p, and function of p is sine inverse p, right? So which is a Clairaut form, right? And then what is the solution? Solution is replace p by c. Okay, so when we replace p by c, this one is the solution. Y is equal to cx plus sine inverse c. Okay, now find the singular solution. तो क्या मेथड है, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू c. So when you differentiate with respect to c, we get 0 is equal to x plus 1 over 1 minus c square under root, and after simplification you will get the value of c in terms of x, and substitute this value of c here, you will get the singular solution. Okay, so substitute this value of c in 1, yes, 1 is this. Okay, so substitute this value of c in 1, we get y is equal to x square minus 1 under root plus sine inverse x square minus 1 divided by x, this, okay, which is the desired singular solution, right? तो इस ढंग से आपको किसी भी Clairaut इक्वेशन के सिंगुलर सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना है, राइट? नाउ इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ कैन वी evaluate the solution of a equation which is not directly Clairaut form, is not directly given in Clairaut form, but by suitable substitution we can convert the given differential equation to Clairaut form. Okay, so equations which are not in the Clairaut form can be reduced easily to Clairaut form by suitable substitution or transformations. ठीक है, तो देखिए जब आप Clairaut form में reduce करोगे तो कौन सी substitution यूज करोगे? यहाँ लिखा मैंने सुटेबल सब्स्टिट्यूशन.
लेकिन वो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या है? कोई मेथड तो है नहीं कि इक्वेशन देखी और आपने बताया कि ये सब्स्टिट्यूशन लगेगी, ऐसा तो कोई मेथड नहीं है। तो देखिए इजी कुछ भी नहीं है, ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है ये इजी नहीं है, इसको आप रिमूव कर दो, अपने माइंड से रिमूव कर दो कि ये इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो इक्वेशन विच आर नॉट इन कोलैरेट फॉर्म कैन बी रिड्यूस्ड टू कोलैरेट फॉर्म बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन oblique transformations. Let us solve this problem. X square into y minus px is equal to yp square. Now we have given this equation. Okay, now in this equation if you see we cannot represent this like y is equal to px plus function of p. We cannot represent this equation. Okay, but this equation can be reduced by suitable substitution, can be reduced to the Clairaut form by suitable substitution. Now that substitution is in this problem, x square is equal to u, substitute this one, and y square is equal to v, substitute this one. अब देखिए ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हमें नहीं पता, बट अगर ये सब्स्टिट्यूशन आप करोगे तभी तो मैंने इजीली वर्ड हटा दिया है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर पैटर्न पता हो, प्रोसेस पता हो तो फिर तो सारा कुछ इजी है, फिर तो कैलकुलेशन बचेगी, ठीक है। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, वो यही है कि क्या सब्स्टिट्यूशन की जाए कि आपकी ये जो इक्वेशन है ये क्लैरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। नाउ x square is u, y square is v, so 2x dx is equal to du and 2y dy is equal to dv. Now calculate the value of p. Okay, so p is dy over dx, that one is dv over 2y divided by du over 2x. So this 2 and this 2 cancel, we get x over y dv over du, and this dv over du is p. Okay, this p, and x is under root u, y is under root v. So we obtain under root u over under root v p. Now substitute this value of p and x and y here. Okay, so when you substitute these values, the given equation becomes this x square is u, so u, and then y is under root v, so under root v, minus p is under root u over under root v capital P. Okay, and x is under root u. Okay, this step is okay, is equal to y is under root v, and p square is u over v p square. This step is also correct. Okay, just simplify, we obtain finally v is equal to up plus c p square, which is nothing but in this equation is in Clairaut form. Okay, this equation is of Clairaut form, and when this one is a Clairaut form, then we know solution, just replacing p by c. So solution is v is equal to u c plus c square, but at last substitute the value of u and v also. Okay, so when you substitute the value of v and u, we get y square is equal to cx square plus c square. This one is the required solution, required general solution of this Clairaut, of this equation, which is not given in Clairaut form initially, but after this suitable substitution, this equation converted into the Clairaut form. Okay, so in this way you can solve these type of problems. अब देखिए इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम में भी यही सब्स्टिट्यूशन आपने यूज करनी है, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कि ये सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पहले अच्छे से किया होगा तो आप एकदम लिख पाओगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है और ये सब्स्टिट्यूशन करके ये क्लैरिट फॉर्म बन जाएगी। अब एक और प्रॉब्लम देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इट टू क्लैरिट फॉर्म बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगी, ठीक है। अब आप सोचो क्या सब्स्टिट्यूशन लगाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तभी आप निकाल पाओगे अगर आपने ये प्रॉब्लम कर रखी हुई है, हाथ से इसको पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है, तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, reason is in this problem put u is equal to y and v is equal to xy. अब कहीं से कोई हिंट नहीं है, ठीक है, कि ये कहां से लिया, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इक्वेशन इज नॉट गिवन इन Clairaut फॉर्म, बट बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन वी कैन कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू द Clairaut फॉर्म। अब देखिए कैसे, तो u is equal to v, so du is equal to dy, clear। v is equal to xy, so dv is equal to y dx plus x dy. Now that can be written as u dx plus u over v over u du.
okay, and from this component dv is equal to this result. So dv minus u v over u du is equal to u dx, okay. This means dx can be written like this way, dx can be written like this way, and dy is du, okay. Purpose is first initially to evaluate the value of p, okay. So p is dy over dx, this means du over u dv minus v du divided by u square, just substitute, okay, and just simplify, we get u square over up minus v. What is p? p is du over dv. अब ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो आपका ये एक्सप्रेशन बनेगा, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, एंड सिंप्लीफाई, एंड फाइनली we get v is equal to up plus function of p, means minus p square, which is of Clairaut form, right. So by suitable substitution, this problem, this differential equation converted into a Clairaut differential equation, and when this one is a Clairaut differential equation, then solution is by replacing p by c, okay. So by replacing p by c means v is equal to uc minus c square. At last substitute the value of v and u, okay. So we get xy is equal to cy minus c square, which is the required solution of the given differential equation. So this question is very very important, ठीक है, क्योंकि बाकी जो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा वहां क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा हिंट आपको मिलता रहेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन हम क्यों कर रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का आपको हिंट नहीं है, ठीक है, कि ये सब्स्टिट्यूशन करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्लैरेट फॉर्म में बनेगी, ठीक है. Now this question, e raised to power 4x p minus 1 plus e raised to power 2y p square is equal to 0, okay. Now in this problem, x is equal to e raised to power 2x, y is equal to e raised to power 2y. ये थोड़ा सा आइडिया यहाँ से आप ले सकते हो कि यहाँ पर क्यों ऐसा सब्स्टिट्यूट किया गया है, okay. Now dx is equal to 2 e raised to power 2x dx, dy is equal to 2 e raised to power 2y dy. Then calculate the value of p. P is dy over dx. This means e raised to power 2x over e raised to power 2y dy over dx. And that one is capital X over capital Y into p, where p is dy over dx. Now substitute these values, okay. So when you substitute these values, we get this differential equation, which is nothing but Clairaut form. And when this one is a Clairaut form, then replace capital P by C, okay. So we obtain y is equal to cx plus c square. And finally, substitute the value of x and y. So that one is the solution of the given problem. तो देखिए इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक डायरेक्शन है कि ऐसा लेने से ये प्रॉब्लम बन सकती है. स्टेटमेंट से ही हम ये x और y को देख रहे हैं, राइट. नाउ वन मोर क्वेश्चन, p minus 1 e raised to power 3x plus p cube e raised to power 2y, okay. So in this question, e raised to power x is capital X and e raised to power y is capital Y. So that the value of dx is this, value of dy is this, and the value of p is x over y p. इसको देख लो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, बड़ा सिंपल है ये तो, e raised to power x है, डिफरेंशिएट करना भी आसान है, ठीक है. अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये सारी वैल्यूज. When you substitute all these values, we get y is equal to xp plus p cube, which is of Clairaut form. Then what is the solution? Solution is y is equal to xc plus c square. And finally, substitute the value of x and capital Y. Means e raised to power y is equal to cx, c e raised to power x plus c cube. So in this way, we can represent, we can show that this one is the solution of this differential equation, which is not initially is given in Clairaut form, right? So similarly, one more question. Sin y cos square x is equal to cos square y p square plus sin x cos y p. यहाँ भी जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही कुछ सब्स्टिट्यूशन सुटेबल की गई है, ठीक है. देखिए यहाँ पर क्या पुट करोगे, पुट sin y is equal to u, sin y is equal to u, and sin x is equal to v. So sin x is equal to v, and this sin y is equal to u. So sin y is equal to u. ये आपने लिया है. And calculate the value of p. P is dy over dx. This means du over cos y, dv over cos x, and we get du over dv cos x over cos y. Okay. Now substitute all these values in the given differential equation. Then this equation becomes u cos square x is equal to
cos square y du cos x over dv cos y square plus v cos x cos y du cos x over dv cos y. So substitute the value of sin y and sin x and finally the value of p in the given differential equation. Now simplify, okay, simplify this differential equation, right? तो जो जहां से कैंसिल हो रहा है, देखिए ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद यहां से भी देखिए cos y जो है, ये cos y जो है, ये cos y के साथ कैंसिल हो रहा है, ये cos x है, ये cos x है, ये cos square x हो गया, ये cos square x हो गया, ये cos square x हो गया, ये थ्रू आउट कैंसिल हो गया. अल्टीमेटली we obtain simple equation, okay, we obtain this type of equation, u is equal to vp plus p square, u is equal to vp plus p square, which is of Clairaut form. Then what is the solution? Just replace p by c, okay. So when we replace p by c, we get u is equal to cv plus c square, and finally substitute the value of u and v. So this one is the solution of given differential equation. तो इस टाइप से आपने कुछ और प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की आप करोगे, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, आप उनको सबको सॉल्व करके देखिएगा. जब एक बार आप कैलकुलेट करोगे तो फिर एग्जाम में जो मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, राइट. सो वन मोर प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into 1 plus p square plus is equal to 2x plus y 1 plus p x plus y p minus x plus y p square. In this problem, rewrite this whole differential equation. We get x square plus y square is equal to 2x plus y x plus y p 1 plus p minus x plus y p 1 plus p square. So just rewrite this differential equation. अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप? यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x square plus y square is equal to v. So x square plus y square is equal to v. And second, x plus y is equal to u. Okay, so x plus y is equal to u. ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया. यहाँ से रिजल्ट बनेगा 2x plus 2yp is equal to dv over dx, and from this 1 plus p is equal to du over dx. Now calculate dv over dx, dv over du. dv over du is 2x plus yp over 1 plus p. Okay, now substitute all these values. Okay, so then this given equation becomes v is equal to, okay, v is equal to, right, u dv over du minus 1 over 4 dv over du square. तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, and this equation is nothing but is Clairaut form. Okay, so just replace this p means dv over du. Okay, replace this p by c. Okay, we get v is equal to uc minus 1 over 4 c square, and finally substitute the value of u and v. Okay, so we obtain x square plus y square is equal to c x plus y minus 1 over 4 c square. Okay, so this one is the solution of the given differential equation. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है. ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है. आपको स्टेटमेंट से तो लगेंगे बहुत छोटे से स्टेटमेंट है, बट जब आप करोगे तभी उसकी जो ब्यूटी है प्रॉब्लम की पता चलती है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस few applications of this ordinary differential equations, like how can we evaluate the orthogonal trajectories or physical type of problems or electrical circuit type of problems. We will discuss in future videos. Okay, thank you very much.